Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. In this video, I am making an alum solution to create unique effect on silk fabric. For this solution, I add 3 tablespoons of alum to 1/4 cup of warm water. Alum is a natural mordant, commonly used in eco-printing and dyeing. It helps fix the dyes to the fabric and ensuring they last longer and don't fade easily. Not only does it enhance the sharpness and richness of colors, but it also creates beautiful, vibrant results when applied on silk. We will use this alum solution to achieve a beautiful effect in this video. So don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated on new videos. Follow me on Instagram and Facebook for more creative tips and updates. शावर से सिल्क पे पानी अप्लाई कर दें और कोशिश करें कि पानी की मुनासिब मिकदार ही स्प्रे हो, क्योंकि मौसम के चेंज होने से टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया है, इसलिए सिल्क को ड्राई होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है. अप्लाई वाटर ऑन टू द सिल्क यूजिंग अ शावर स्प्रे, ensuring that you only use a suitable amount. Since the temperature has dropped due to seasonal changes, it may take a longer time for the silk to dry completely. पानी अप्लाई करने के बाद सिल्क पे कलर लगा लें. मैं आज चेक प्रिंट करने वाला हूँ, इसलिए बेस कलर येलोइश ग्रीन लगाया है. After applying water, add color to the silk. Today I am going to create a check pattern, so I have used a yellowish green as the base color. कलर को स्पंज से लगाने से कलर इक्वल अप्लाई हो जाता है, इसलिए स्पंज से कलर को अच्छी तरह तमाम एरियाज में अप्लाई कर लें. Using a sponge to apply the color ensures it spread evenly. Therefore, make sure to use the sponge to thoroughly cover all areas with the color. अब एमरल्ड ग्रीन के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स स्पॉन्ज से अप्लाई करेंगे. मैं रैंडम फासले पे स्ट्राइप्स पेंट से बना रहा हूँ. आप कोई सा भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. Now I will apply vertical and horizontal stripes using emerald green with a sponge. I am creating the stripes randomly. You can follow any pattern you like. सबसे पहले मैंने जो स्क्वायर्स बनाए हैं उनमें एलम सॉल्यूशन सर्कल्स में अप्लाई करूँगा. उसके बाद एमरल्ड ग्रीन की स्ट्राइप्स के दरमियान में एलम सॉल्यूशन की लाइंस ब्रश से ऐड करूँगा. फर्स्ट आई विल अप्लाई एलम इन अ सर्कुलर शेप within the squares. After that, I will use a brush to add lines of alum solution between the emerald green stripes. जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था तब टेम्परेचर कोई 25 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होगा, इसीलिए कलर्स लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट्स तक फैब्रिक को छोड़ दें और 30 मिनट्स के बाद एलम सॉल्यूशन लगाना शुरू करें, क्योंकि इस टेक्निक में अगर सिल्क में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा. While recording this video, the temperature was between 25 to 30 degrees Celsius. Therefore, after applying the colors, leave the fabric for at least 30 minutes before applying the alum solution. This is because for the technique, if there is too much moisture in the silk, the result may not turn out as well. जैसे जैसे हम एलम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं वहाँ से कलर फेड होना शुरू हो जाता है. इसकी वजह कलर का फेड होना नहीं बल्कि कलर का अपनी जगह से हट जाना है. As we apply the alum solution, you will notice that the color begins to fade in those areas. This is not because the color is fading away, but rather because it shifts from its original spot. एलम सॉल्यूशन अप्लाई करने के कुछ देर बाद हम इसका रिज़ल्ट देख सकेंगे. जैसे जैसे सिल्क ड्राई होगी वैसे वैसे रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा. आफ्टर अप्लाइंग द एलम सॉल्यूशन वी विल स्टार्ट टू सी द रिज़ल्ट्स आफ्टर अ लिटिल वाइल.
As the silk dries, the effect will gradually start to appear. टाइम लैप्स में आप देख सकते हैं जैसे जैसे सिल्क ड्राई हो रही है एलम सॉल्यूशन अपना काम दिखा रहा है। एलम को जब गर्म पानी में हल करते हैं तो पानी ठंडा होने पे एलम सॉल्यूशन में एलम के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं एलम सॉल्यूशन का फ़ौरन इफ़ेक्ट नहीं आया, बल्कि जैसे जैसे सिल्क ड्राई होती गई इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो गया। In the time lapse, you can see how the alum solution gradually works its effects as the silk dries. When alum is dissolved in hot water, crystals begin to form as the water cools down. This is why the alum solution's impact doesn't appear instantly. Instead, it becomes visible as the silk continues to dry. सिल्क ड्राई हो जाए तो फ्रेम से उतारने के बाद हमेशा की तरह दोनों तरफ से आयरन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सिल्क पेंट्स इस्तेमाल किए जो आयरन फिक्स्ड हैं और हर बार आयरनिंग, वॉशिंग एंड फिर आयरनिंग वाला प्रोसेस हर वीडियो में रिपीट करने की वजह सिर्फ यही है कि आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप कंप्लीट प्रोसेस देख सकें। Once the silk is dry, after removing it from the frame, it is essential to iron both sides as usual because we have used silk paints which are iron fixed. The process of ironing, washing and then ironing again is repeated in every video, and the reason for this repetition is that if you are watching the video for the first time, you can see the entire process clearly. आयरन करने के बाद सिल्क को टैप वाटर में 5 मिनट्स के लिए भिगो दें ताकि सिल्क से एलम सॉल्यूशन निकल जाए। उसके बाद वायर पे ड्राई होने के लिए सिल्क को हैंग कर दें। आफ्टर आयरनिंग, soak the silk in cold water for 5 minutes to remove the alum solution. After that, hang the silk on a wire to dry. ड्राई हो जाए तो सिल्क को दोबारा से आयरन कर लें ताकि सिल्क के रिंकल्स निकल जाएं। Once the silk is dry, iron it again to remove any wrinkles. Here is another technique for you, and today's result has turned out to be very beautiful. Alum, which is very beneficial in our daily routine, will also be as effective in silk painting as it is in our daily lives, as demonstrated in today's experiment. I hope you liked today's video. Don't forget to like the video and share it with your friends. You can share your valuable feedback in the comments section, and if you have any suggestions, feel free to share them as well. Take care of yourself. Keep me in your prayers. Allah Nigeban.